way to predict future is to create it. Take a move. Create a future. Join Shobit University. As a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, with a vision of transforming India into a developed nation, I'm joining Shobit University. What about you? Yes, sir. Please start, sir. Good morning. Sorry, good afternoon. Good afternoon, sir. Please, sir. Gentlemen, please unmute yourself and please start. Yeah, sure. Namaskar and very good afternoon to you all. Respected speaker of the session, Dr. D.D. Agarwal ji, all the deans, HODs, professors, faculty, students, and participants, I welcome you all here at this virtual platform of co-learning webinar series. Today, the topic is related to education. Now, the topic is very relevant and the topic is well chosen. Education for all without barriers and open education resources. We have Professor Dr. D.D. Agarwal ji. Before I invite him, I would like to introduce him. Dr. D.D. Agarwal ji is a highly experienced academician with 55 years experience in teaching, research, and extension. From 1966 to 1983, he served as a school teacher. And from 1984 to 2011, he worked as a faculty in the Department of Adult Continuing Education, University of Delhi. His area of specialization lies in non-formal and open education. After superannuation in 2011, he continues teaching and research as a visiting faculty and PhD supervisor in many universities. He is also associated with CBSE, NIOS, IGNU, besides DU, Annamalai, Mewar, Mangalam, JJT University. Now he is associated with Shobit University, Gangu and Meerut. Now I would like to invite you, sir. Please share your scholarly vision with us. I welcome you, sir. Over to you, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, everybody. Can you listen to me? Yes, sir. सब You are सुन पा quite रहे हैं ना? audible. Yes, yes. You are quite audible, sir. जैसा जी, मेरा जी. टॉपिक है, में 3 वर्ड्स हैं. एक तो अच्छा. है एजुकेशन फॉर ऑल. ठीक है ना? Education for all. What is education? Education is a wide term, many different for different people. For example, you cannot generalize what is education. Suppose there is a bank person. For him, education is how to give loans. Okay, how to accept FDs. For example, system analysis, financial expert. For example, he will say in finance, how to manage finance, audit, banking, law, medicine. So for everybody, education has different meaning. I say education is an attempt to attain perfection in a particular area. You agree or no? It is an attempt. We want to achieve something. We want to become perfect in some area. So that's how we get education. The latest definition of education is that it is the process of facilitating learning. Okay, when I say facilitating, it means that all who help us in learning, our parents, our neighbors, society persons, teachers, news, media, everybody. So that is why you cannot limit or confine the process of education to a certain thing. Second aspect is acquisition of knowledge, skills, attitudes, experiences.
by the people. That is learner-based. Now, so that is why there is a shift from formal education to non-formal education. Formal education is much rigid. We all belong to higher education system where we say, yes, you want to do graduation, you want to 12th class. You want to be postgrad, you should be undergraduate. You want to become a B.Ed, you must do that. Okay. So there was a lot of rigidity. Entry level, process level, and evaluation level. But now, slowly and slowly, there is a shift. Now it is getting more learner friendly to provide you an interesting, lovely experience for learner. Not a type of cruelty that you have to learn this thing. So instead of negative motivation, we go for positive motivation. So as I said, my topic today is education for all. When I say all means who are willing to learn. Now we say education goes throughout your life. So education is an attempt to achieve knowledge. Open education. Open. Open means not closed. Open to all. Accessible. Reachable. Acceptable. जिसको हर कोई जब चाहे जैसे चाहे उसको स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके. I give example that we are saying now in open learning, walk-in admission, on-demand examination. You got the point? It means that whenever you want to take admission, you enter. We call it walk-in admission. Second is on-demand examination. If I learned something, why I should wait for 1 year, 6 months? जब एग्जाम होगा तब एग्जाम दे लेंगे. मान लीजिए उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको जाना पड़ गया, तब एग्जाम दोगे नहीं. इट मीन्स आपका 1 साल बेकार. फिर फॉर्म भरो, फिर एग्जाम दो, सेम टॉर्चर. So now we are saying on-demand examination, ODE. Whenever I want, I should be given a test. So open means flexible at all levels. My friends are not aware that there have been some experiments in this where if you are not graduate, you can take admission graduate. You are not graduate, you can take admission postgraduate. What you call open university system. Okay? So now open is getting more acceptance. There are about 12 universities in India which are providing open education through various means. Third point is your resources. What is a resource? Resource is that which can be used for our purpose. We know that there are 3 types of resources. One resource is human resource. Teachers, professors, doctors, engineers, computer operators, architects. All these are human resources. Suppose you want to go for treatment, you take help of doctor. You have some legal issue, you go to a lawyer. You want to construct a house, you meet an architect. Okay, if you want some computer work, you go to computer expert. You want some help with financial management, you go to a financial person. These, I think, some people must have joined our talk, where they are providing help in investment. You want to invest your money so that you earn something. So how to invest in a rational way so that you not suffer. So they will tell you, you might invest in shares, you might deposit, fixed deposit in banks, you might go for mutual funds. So that way they provide so many ways how to invest your money. Suppose you want to construct a house. So you go to architect, you provide him, I've got this space, I want to construct 2-story house. How best I can do it?
You know, in Western countries, here in India, for example, property, brokerage, everybody has become a property dealer. But there they have special courses in how to calculate the price of a structure. So that's why I want to say that human resource is very important. Second resource we know is technical resource, which we shall be discussing today. Third is our physical resource. Physical resource means material, buildings, anything. So that way, these days, we are focusing on open education resources so that we can use them whenever we want. For example, a housewife, she wants to continue study, but the whole day she is busy in looking house affairs, taking children food, okay, looking after husband needs. So she can approach open education resource when she is free. It means that she has access to open education resources. In India, you know, we have both traditional, ancient, and modern open education resources. Libraries, for example, in our times, remember 1960s, 50s, we used to go visit libraries. We used to visit reading room or newspapers. We would go to radio to get news. And then came television. So that the way they were open education sources at that time. Before that, our ancient times, we had our saints, gurus, holy teachers who will give discourse. We had holy books which we could read to enlighten ourselves, to make our life better. So that way, but now, since we are in an area of technology, so we are using technology as an open educational resource. So I shall define what is educational resource. मैडम आप दिखाएंगी, आपके पास है क्या वो स्लाइड्स, क्या मुझे बोलना होगा? मैं अपना म्यूट कर देता हूँ. Sir, I don't have slides. अगर आपके पास slides हैं तो you can share your slides. मुझे तो बोल के देखना पड़ेगा, मेरे पास तो प्रिंट आउट फॉर्म में. Sir, if you send me slides, then I can share. Okay. Wait for some time then. Okay. ठीक है. जी जी. उसको मैं सुनिए ना, भेजे थे. बड़ा मुश्किल है.
बड़ी मुसीबत है यार। हाँ मैडम, हेलो। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, वो भी भेजता हूँ मैं इन द मीन टाइम अदर कंट्री फ्रॉम प्रिंट, ठीक है? सर मेल पर अच्छा भेजिएगा। स्पीक। सर मेल पर भेजिएगा। डीसी हाँ डीसी गुंजन। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। सर व्हाट्सएप पे अभी नहीं हो पाएगा, मैं आपको मेल आईडी भेज रही हूँ डीसी आपके गुंजन व्हाट्सएप पर। पे पहले मैं शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, कोई बात नहीं। श्योर सर, तो श्योर आपको भेजे थे मैंने शुरू में, सर। मैं आपको मैंने चेक भेज चुका हूँ पहले में। सर चेक करती हूँ, अब हाँ चेक भेज, करती हूँ। हो सकता है बहुत पहले कभी हाँ भेजे हो। जी जी हाँ भेज थे मैंने। सर, यू प्लीज कैरी ऑन। अगर ठीक है, मिलते हैं तो मैं कर देती हूँ शेयर। जी मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो ओपन एजुकेशन resources are freely accessible. Openly licensed instruction materials such as text, media, and other digital assets that are useful for teaching, learning, and assessing as well as for such purposes. मैडम मेरे व्हाट्सएप पे तो आ गए हैं, व्हाट्सएप भेजूं आपको मैं मैडम? जी सर, प्लीज मैं भेजिए। व्हाट्सएप पे हाँ आ गए हैं, व्हाट्सएप पे श्योर सर, श्योर अभी भेज भेजता हूँ। दीजिए। जी ये अजीब लेडी, देखा क्या दिक्कत आती है अनपढ़ आदमी को। अब फिर खोल लो। वो भेजा, आप देख लीजिए उनको। हल स्टार्ट, ठीक है? श्योर सर, श्योर श्योर। The certain OER describe publicly accessible materials. Anybody can use, reuse, remix, improve, and redistribute. It means that to some extent, copyrights rule does not apply to OER because they are in public domain. Now, I shall define what is OER. UNESCO in 2002 coined this term. It says that OER are learning, teaching, and research materials in any format and medium that reside in the public domain. So, focus is on public domain or under copyright that have been released under an open license and that permit no cost access, reuse, repurpose, adaptation, and redistribution by others. It means that if I am providing you some open educational resource, you can use it for others also. ठीक है? Next is what we can do with OER. We call them R activities. First is retain. OER has the right to make, own, and control copies of the content. That is, you can download them. If they are in on site, you can download them.
डुप्लीकेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। फिर इनको आप क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर, वेबसाइट पर, वीडियो पर रीयूज कर सकते हैं। तो आज मैं री यूज कर रहा हूं। तीसरा आपका क्या है? रिवाइज। You know, content are always revising. Focus is always changing. So, an open education resource user can revise. Suppose I find that this content is no longer valid. So I can rewind it. Or I know the language or terms of this source is very tough. I'll give example, for example. हम सब लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वर्ड होता है डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, अर्थात पेड़ों को काटना। अब हिंदी क्या होगी? मैं पढ़ा रहा था, लिखा था निर्वनीकरण। निर मीन्स डी, वन फॉरेस्टेशन। आम आदमी की भाषा में समझ नहीं आएगा। हम कहते हैं इसलिए कि पेड़ काटने को रोकना। अर्थात वी कैन रिवाइज or adapt or modify or alter the content. This has to be done because we have to see the level of understanding of the learner. Fourth point is remix. Remix means that we can combine the original, revised material of other sources so that it can be used by the user. Last is your redistribute. Means OER can be redistributed. The right to share the copies of your content, you can redistribute what you've done or revised or what you have remixed. It means that we can use them as distinct. Now, after 2002, where UNESCO used first, thus OR resources became a very common word. OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, they redefined OER as digitalized materials offered freely and openly for educators. We all are educators, so we use them. Students, above all, self-learners. These days, we focus on self-learners. The learners who do not depend upon teachers, who do not depend upon others, who want to learn themselves at the time and the place when they want to learn. So we can use them for teaching, learning, and research. Many of our students, teachers go for research. It may be for degree, it may be for some project, whatever it may be, but we use them. So we can use OER for also. They include learning content, software tools to develop, use and redistribute content and implementation of resources as open licensing. Now, some people are very choosy. Some people are very particular. कि उन्होंने जो मैटर बनाया है उसे कोई और इस्तेमाल ना कर ले। इसीलिए एक तरीका होता है जो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स और कॉपीराइट्स. So for that you get licensed. There are various types of licenses.
As I told you, they relate to intellectual property rights. Our textbooks are protected under convention copyright. It means that there is a written in the beginning that this cannot be, this content is protected by copyright. You can't reuse them. But now there is a alternative flexible licensing system which are available. For example, there are a large number of NGOs, non-government organization, non-profit making organization. They want to provide education to the people. So for them, there is a provision that they can use a flexible matter for their use. Another is GNU, what you call General Public License, or free and open source software, FOSS. अब नोट कर लीजिए, free and open source software. We have developed softwares, ठीक है ना, जिनको कोई भी आदमी, कोई भी लर्नर इस्तेमाल कर सकता है. Then I come to what are various types of OER. There are various ways of finding types. For example, OER based on media. It may be text or print, which is a very common way. Library में ये magazines हैं, journals हैं, textbooks हैं, help books हैं, reference material है ना? They are called text or print media. Then we have visual or photographs. We have audio cassettes. We have audio visual cassettes, animations. These, I think, are still very traditional animation, audio visual. You know, when you are dealing with public, common people, you want to teach something, there you use animation as a source of material. Then other form is quality. For example, whether it is published by self, whether the material is reviewed, whether it is peer reviewed, or whether there is a option of post review. Means that if I have produced a material, for example, some person has done his research work, PhD. Okay. So he can get it published. He can send to his friends. He can send to experts, or he can say, okay, I've done it. Now I can go for post review. Then how you present the OER. One is slide sharing. अभी ऐसे मैडम से कहा था कि मैंने आपको स्लाइड भेजी हैं, ना आप दिखा दीजिए, मैं बोल लूंगा. इसे कहते हैं हम स्लाइड शेयरिंग. सेकंड इज क्लास प्रेजेंटेशन. सर स्लाइड शेयर कर दीजिए. कर देंगी? कर रही हैं आप? सर प्लीज वेट अ मिनट. हाँ वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं.
अगर किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी हो तो बीच में पूछ सकता है। कोई और करना चाहते हैं, आप कमेंट देना चाहते हैं, दे सकते हैं। छोटे हाँ, मैं काफी मैंने कवर कर लिया है, तो अब आगे बढ़ सकती है। So this one, ये तो हो चुका ना मैडम। okay, टाइप्स भी हो गया, टाइप हो गया, types of भी हो OER. गया, टाइप भी हो गया। हाँ, इसके बाद का आएगा। हाँ, ये उन्होंने कवर कर दिया है। एडवांटेजेस बात करेंगे। सब लोग आप देख पा रहे हैं ना स्लाइड्स को? हेलो, एनीबॉडी कैन रेस्पॉन्ड? आप सब देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, पूरे फॉर्म में पूरा पढ़ पा रहे हैं? Yes. हेलो Yes, please. कनिका, Ma'am, please press F5. पढ़ पा रहे हैं इसको? Yes, sir. Yes, sir. Please release the- अच्छा, देख लीजिए, इसमें दिया आपको एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ओईआर। सबसे पहला क्या है? एक्सेसिबिलिटी। इसको हम इजीली एक्सेसिबल है। शर्त क्या है कि जब हम यूज कर रहे हैं मीडियम, वो वहां पर अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, यू आर टू स्टडी ऑनलाइन, so you should have computer for that, internet connection for that. They want to be useful, but you have print material, you can use anywhere. Okay, if you are some other, so depends upon availability of the place. Second is they can be modified. हमें कुछ बेस मैटर अवेलेबल है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको नैरो भी कर सकते हैं, ताकि वो काम हमारे काम के लायक आ सके। जैसे आप में से कुछ बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी करने के समय हम देखते हैं रिसर्च मेथड्स, अब वो सब अवेलेबल हैं ओईआर में। आप चाहे तो क्वालिटेटिव करें, चाहे क्वांटिटेटिव करें, चाहे कुछ भी करें। आप सैंपल कौन सा लेंगे आपको पता लग जाएगा, आप टेक्निक को इस्तेमाल करें आपको पता लग जाएगा। इट मीन्स दैट यू कैन मॉडिफाई द कोर्स मटेरियल। द टीचर, द लर्नर, द यूजर कैन मॉडिफाई द कोर्स कंटेंट so that it is useful for them. And you can also enhance it. This technique. Suppose there is a content in written form, you can convert it to figures, images, statistical diagrams. Third is rapid dissemination of information. जैसे ही कोई नई खोज होती है, नई नॉलेज आती है, नई स्किल आती है, तो हम ओईआर के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भाई एक जगह एक बार बन गया, then इसको we can go on using. क्योंकि जो प्रिंट मटेरियल है वो स्टैटिक होता है, कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हमारा ये डिजिटल मटेरियल है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है? कॉस्ट सेविंग। हम जब पढ़ते थे तो हर बार किताब खरीद के लाओ, है ना? यू टू स्पेंड मनी, नाउ यू कैन स्टडी थिंग्स ऑन ऑनलाइन। और लास्ट क्या है? कॉस्ट सेविंग फॉर एजुकेटर्स, टीचर्स। ठीक है ना? अब मान लो मुझे पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? वो या इकट्ठे कर कर मुझे पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मैडम। Sure, sir. इसके डिसएडवांटेज भी है। What? वो क्या है?
इसको मैं बाद में पढ़ दूंगा। सबसे बड़ा क्या है? क्वालिटी। आप जानते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सब लोग दे गो फॉर इजी ऑप्शन। तो इसमें क्वालिटी रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। हमें यह पता करना पड़ेगा कि जो मटेरियल हमें मिला है उसे प्रोड्यूस किसने किया है। मैं तो एजुकेशन रिसर्च का बैकग्राउंड का आदमी हूँ। इसमें हम यूज करते हैं टूल्स फॉर टेस्टिंग, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। अब वो टूल्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है देखना पड़ेगा। फिर जो टूल अमेरिका में बना है क्या वो यहाँ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो टूल हमारे यहाँ बना है क्या टूल अफ्रीका में इस्तेमाल हो सकता नहीं हो सकता है। इसका क्या है? क्वालिटी रिलायबिलिटी, हाउ रिलायबल एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ दिस कंटेंट इज और OER is. Second is copyright. Third is use of technology. अभी आपने देखा जब से ये पेंडेमिक आया सभी लेवल पर ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई। अब जो गरीब बच्चे हैं जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो, सेकेंडरी के हो, कॉलेज के हो, प्रोफेशनल के हो, नहीं पढ़ पाए, या मान लो पर बिजली नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी एरिया है ना यहाँ पे तो बिजली नहीं पहुंची है, भी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, आती नहीं। मान लो कोई क्या हुआ उस टाइम लाइट नहीं आ रही, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी की इश्यूज क्या है। अभी आपने देखा ना कि मेरे पास वो था लेकिन मैं भेज नहीं पा रहा था। I request somebody else to send to you. No matter I'm using it on my behalf. So that is one aspect of the advantage. Next, madam. Next slide, madam. Next. Now we come to India. In a context, we have used the word MOOC. What is MOOC? Massive Open Online Courses. Massive means for masses. Open for all. Online, only you can get them through online. Last word is courses. So MOOC is a form in which we provide education to masses through open means on online. It means that a large scale interactive participation of users with the help of webs. Then there are vehicle videos. Study materials, quizzes, online exams, everything. So these days we are focusing more on online. Third point बड़ा important है, वो क्या है? Free access to organized content. When some content is put on for public use, we have to ensure that it is of good quality. The content is relevant. Content is not obsolete. Content can be used. And it also offers quality education to the most remote corners of the world. When we say education is getting globalized, it means that content can be used by any person at any place. So the next one very important, the careers.
helps people further their career. When I say upgradation of career, growth in career, why I should be given promotion? Why I should get a better chance? Because I can perform better. Why better? Because I have learned certain things in you. What you call MOOC means value addition to our knowledge, value addition to our skills, value addition to our attitude. So people can improve, people can grow in their careers if they learn some new content. I will give you one example. In hospitality, hotels, guest houses, restaurants, as resorts, new techniques are coming for example, food preparation. New techniques are coming for maintenance of houses, open areas, green areas. So with the knowledge of new development in that, a person can say, sir, now I have got this new technology. I got this new skill. I learned this thing new. So I can perform better. So I should grow. Then people can expand themselves intellectually and network. It means what? When you join some course, there might be other people who are also doing this course. It means that you form a group through which you can meet each other. Next slide, madam. Next. People have no access to formal, not formal higher education. They can participate. What I said, that through MOOC, you can learn. I told you that during 90s, there was open university system where you could join PG course without graduation. You could join UG course without 10th class. It means that the people who do not have access to formal education in the early life, earlier, you know, we had correspondence education where you were provided print material, but that we used to call it quasi-formal education. And now you have access to higher education. There is no bar. It is only your choice what you want to learn. Second is informal and can be organized easily. What is informal? Where you choose your own time, own content, own place. You know, for example, I'm a retired person. I would learn something, or let us say history, archaeological, something else. So I can easily do it. I need not go to some organization to do that. Similarly, for example, who are culinary services, food preparation, they have access to how new dishes can be prepared. These days we know about so many things. Third is learning will be possible by collaboration of learners and instructors. In MOOC, I think we may be given name of some experts in the area. We may be given name of instructors. In some cases, for example, you need instructor to help you to learn something. The courses which involve practical training, case studies. In that cases, we need instructors. So there is a provision of collaboration between learners and instructors. Next is your well-designed
courses by famous professors from prestigious institutes, university. आप लोगों को शायद मालूम नहीं है और हो भी नहीं पाया. जो हमारे पिछले वाइस चांसलर थे प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने कहा जो हमारी यूनिवर्सिटी के बेस्ट टीचर्स हैं उनसे कहिए वो बेस्ट लेक्चर्स तैयार करें in digital form and they should be available to all students. For example, in our university, we have non-formal system through correspondence. We call it open learning, where we have graduate students doing BA, BCom, honors, PG. Now, they do not have access to quality material. They have to depend on print material provided by the institute. Not our everywhere. So why not we should have provide quality material prepared by experts in the area so that a common person can use it. Then there is a variety in the sense that you can choose of your choice. Flexibility is the high mark of any open education. Flexibility. You can skip if you don't want. Okay, you know, there is a content before you which you think is not relevant for me. Suppose you are learning how to cook. There is a lesson on meat cook, how to prepare non-veg. I can skip that. I am not interested in that. So that way I can skip. Flexibility in content, flexibility in instruction, flexibility in learning. The interaction with course mates all over the world. Course mates. As you know, these days we make WhatsApp groups so that we can interact among ourselves. Similarly, we can make course mates. Now, these course mates will be very helpful because they may belong to variety of background. They may be female, the profession may be different, age may be different, area may be different. Somebody may be from South India, somebody may be from North India, maybe abroad. So that way you internationalize yourself. Last point is instant assessment and feedback. Examination assessment has been a cruelty for our children. There are phobia among the children. अरे एग्जाम आ गया, हमारा फेल होना पक्का है. कैसे होंगे? हम ढूंढते हैं कि कोई अनफेयर मीन से निकल जाए. लेकिन जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो आप सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं. अगर कभी आप ओपन इंस्टीट्यूशंस का कोर्स कंटेंट देखें, जिसे हम कहते हैं SIM. व्हाट इज SIM? सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जिसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन खुद दे सकते हैं. तो मैं शुरू लिखा होता है we divide the whole content into what you call program, units, sub-units. In the beginning of every unit you are given, after reading this, you will be able to answer these questions. At the end, you can answer the question. So you can self-assess. In that case, you need not feel any type of what you call humiliation. अबे तू तो फेल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जब फेल पास होता ही नहीं है, असेसमेंट है अपना, समझ गया, ठीक है, दोबारा पढ़ लेंगे और फीडबैक मिल जाता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसकी? सबसे बड़ी क्या है? प्लेगरिज्म. हम कहते हैं ना टीपू सुल्तान, हमें एक दूसरे का टीपने में एक्सपर्ट है. अब जब लोग आगे PhD करते हैं तो ये देखना पड़ता है
कितना उसमें प्लेगरिज्म है, कितना परसेंट अलाउड है। अब ये नुकसान तो है कि जो आपका मटेरियल है पता नहीं कहीं से कॉपी किया है या ओरिजिनल है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। जब तक आप खुद पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, टीचर मोटिवेट करते हैं, पड़ोसी मोटिवेट करते हैं, बैचमेट मोटिवेट करते हैं। इसमें आपको मोटिवेट करने वाला नहीं है, आपकी मर्जी है, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। थर्ड पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। हु विल ऑथेंटिकेट? क्या आपको आता है या नहीं आता है? आप टर्म एग्जाम देते हैं, एनुअल एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल देते हैं, तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको ग्रेड मिलता है। इन वीच देयर इज अ बॉडी which is authenticating, approving that you learned thing. They give grades, they give percentage. तो आपका बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, सी ग्रेड है, ओ ग्रेड है, आपको ऑथेंटिकेट कर दिया। ये आपका परसेंटेज है, ऑथेंटिकेट कर दिया। ठीक है ना? तो इसमें ये समस्या रहती है, इसमें आपको खुद ही खुश होना है, इतना मुझे आ गया। एग्रीडेशन, नेक्स्ट पॉइंट सेम ही है, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। अब खुद डिसाइड करना है मुझे कितनी देर पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है। डिपेंड करना है कि फ्री टाइम में पढ़ो, कब पढ़ो। और अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाई ड्रॉप आउट रेट। जब हमारे फॉर्मल सिस्टम में ही इतना बड़ा हाई ड्रॉप आउट रेट है, अब तो घटता गया है कि हम बिना पढ़ाई एग्जाम लिए पास कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं 8वीं तक, तो ड्रॉप आउट होता ही नहीं है। लेकिन पहले तो बच्चे फेल होते ही थे, तो ड्रॉप आउट कर जाते थे। इसमें क्या समस्या है? जब खुद ही छोड़ देते हैं बीच में, यार बहुत हो गया, कौन पढ़े, मुझे समझ तो आ नहीं रहा, या मुझे क्या फायदा होगा, क्यों टाइम खराब करूं, बहुत है। यानी इसमें मोटिवेशन नहीं है, ये ड्रॉप आउट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है? एश्योरिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी। हमारे डीयू में आप जानते हैं ओपन बुक एग्जाम का सिस्टम शुरू हुआ है कि आप बुक खोलकर भी एग्जाम दे सकते हैं। अब आपने कितनी बुक खोली, कितनी देर खोली, कितना टीपा, कितना कॉपी किया, यही बात यहाँ पर अलग होती है कि आप की इंटीग्रिटी। हम तो जानते हैं आजकल तो सब लोग लगे डिग्री इकट्ठा करने में, बाय हुक और बाय क्रुक। कोई डिग्री का परचेज भी कर लेते हैं, है ना? आपको मालूम ही है कि पैसा खर्च करो, आपको डिग्री मिल जाएगी, 3 लाख में, 4 लाख में पीएचडी मिल जाएगी, 15-20 हजार में पीजी की डिग्री मिल जाएगी। और उसका कोई महत्व नहीं होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप खुद खुश हो रहे हैं। और फिर हमेशा आप सोचते रहते हैं पकड़ा गया तो क्या होगा, है ना? जब फिर डिग्री पकड़ी जाती है दिक्कत भी आती है। ये दिक्कत यहाँ पर भी है कि इसमें एकेडमिक इंटीग्रिटी सब आती है। आप कितना कहें समय सीख लिया, लेकिन कोई उसको आपके नहीं। फिर ये थोड़ी बात क्या है, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का आप यूज, जैसे मैं आपको खुलाम कहता हूँ कि आई एम नॉट ए टेक्नो सेवी, मुझे तो कंप्यूटर खोलना ही नहीं आता। मैं तो ये पास सामने जो ये वो एंड्रॉइड क्या है, मोबाइल, ऐसे काम चल जाता है मेरा। तो इस और क्या है कि आज के छोटे बच्चे तो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, शुरू से ही खोल के बैठ जाते हैं अपना कंप्यूटर, जो गेम्स खेलते रहते हैं, तो क्या करते रहते हैं। लेकिन यू शुड नो टेक्नोलॉजी।
Next, automated grading. Last, data conceptualization, interpretation and representation. अर्थात जिन लोगों ने एडमिशन लिया किसी पर्टिकुलर कोर्स में, उसका डाटा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, डाटा मिल भी गया तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? क्योंकि वी डू नॉट नो कि कितने लोग उसके अंदर ड्रॉप आउट कर गए. ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल है. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. नेक्स्ट, स्वयं, ये लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है स्वयं. व्हाट इज स्वयं? बताइए, पढ़ के मुझे कोई बोल के बताएगा व्हाट स्वयं? एनीबॉडी, एनी पार्टिसिपेंट, व्हाट स्वयं? So nobody can read because they can only send message. Yeah. Okay. So Swayam, what is Swayam? It stands for Study Webs of Active Learning. Study Webs of Active Learning for young aspiring minds. अब ध्यान से वर्ड्स के ऊपर. Study webs. They are of active learning. It means that we have a active learner. किनके लिए? Young aspiring mind. Who is young mind? A young mind is that who want to learn something. It doesn't depend on age. It doesn't depend position. It depends only on how young you feel, how young you are to learn something new. So it is an Indian massive open online platform. It was launched by Minister HRD, okay, on 9 July 2017 by our Honorable President. Now, as you know, this type of things need collaboration, cooperation. So, firm was developed by MHRD and AICT with the help of Microsoft. और इसमें लगभग 2000 कोर्सेज हैं. कितने? 2000 कोर्सेज. सोच लीजिए. It offers free access to everyone and courses from 9 to post graduation. और इसका फायदा क्या है? जैसे आपसे मैंने पहले कहा था कि स्वयं में we can use high level professors from prestigious institutions like IIT, like IIM, like Central Universities, ठीक है, like IISER. बीच आपको और बता दूं आपको मैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं या सोचते रहते हैं. हम कभी हो भी नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लर्नर को पे हम कोई चीज थोपे नहीं, लर्नर को हम वेरिड एक्सपीरियंस दें. इसलिए वी शुड प्रोवाइड बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट कंटेंट. आगे से लिखा है कि यहाँ पर 203 पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं, 2748 को कंप्लीट कोर्स किया है, इतने बच्चे एनरोल्ड हैं, इतना एग्जाम हुआ है और इतने बच्चे पास हो चुके हैं. कितने हो चुके हैं? 6,54,664. This is not the latest, but I think last year's figure. Next, what is Swayam? Swayam is one-stop web and mobile-based platform courses ranging from high school to university level. It means that sitting at home, you can do
any course from 9th class to post-graduation. So such a beautiful way, such a easily accessible way is. It also provides quality learning experience. You know, quality depends upon material. Quality depends upon the teacher. Quality depends upon the media. So in this case, we have quality material, quality teachers, and quality media, for example, computers. So we use multimedia, easily accessible, monitoring and certification. Next point is peer group interaction and discussion. Peer play a very important role in all things. And last year, hybrid model of delivery. Now, what do you study in Swayam? What is the scope of Swayam? These days, we are using the word triple L, lifelong learning. हम भी जब पढ़ते थे कहते थे ना, from womb to tomb, from cradle to graveyard, it means that we go on learning. Some learning is formal, some is non-formal, some is formal. I think SWAYAM is providing semi-formal learning. We can't say this non-formal, semi-formal. Why? Because we have proper certification of learning. We have documents that you have joined this course. So it meets the need of lifelong learners. It provides you skill-based courses. The curriculum is based on from diverse disciplines. Then the curriculum is modified. The changes are made frequently and they are certified by professionals. For example, a course in management, course in commerce. So they are certified by IIM people. So course on engineering, architecture, some course on teacher training. So it should be provided by that. Then the courses are independent. You can skip the course we want. You can continue. Next slide, madam. Functionality. मैं उसकी highlight पढ़ दूंगा कि e-tutorial, e-content, discussion forum, assessment. So ask if how it functions. We have got e-tutorials. ठीक है ना? E-tutorials are electronic media. Content is electronic. They are discussion forums. And last year, assessment through multiple choice questions. Quiz questions, short answers questions, frequently asked questions. It means that when you are being assessed, it is basically on MCQ. You know, I belong to India. There are three types of questions. One is short answer questions, very short answer questions, medium answer questions, long answer questions. Here we have only MCQ. MCQ are mentioned because you get multiple choice. Last point here is I will stop after this. National coordinators. There are 9 national coordinators to manage course content. First year AICTE. Second year NPTEL, National Program on Technology Enhanced Learning for Engineering. Third year UGC for non-technical PG courses like MA, graduation like that. So next year Consortium of Educational Communication for students particularly who are interested in communication courses. Then we have NCRT for school education, NIOS. Here I shall focus on NIOS. People take it very lightly. अरे NIOS तो ऐसे ही है, कैसे कर लो?
अगर आप उसका डेप्थ में जाएंगे, it is a highly professional institution which provides you education at two steps. And there are certain things which you do not know about this. For example, stand-alone courses. Stand-alone courses. Suppose you want to do only one subject. For example, you want to say, oh, I want to learn mathematics. Okay, you do only mathematics for 10th level or 10th grade. Nothing else. You know, in Delhi government, a teacher must have studied Hindi at 10th class level. But those who study in so-called advanced schools, modern schools, they don't have Hindi, but German language, other language. For that, they can do only Hindi course for 10th class. That's the benefit of NIOS. It says out of school students. I will say out of school learners. So you have people from 6th age group to 70 age group. Anyway, IGNOU, then IIMM for Bangalore for management, then NITTR for teacher training programs. Next is Swamprabha. I am skipping it. Okay. Last point today is blended learning. BL. अब लास्ट में आ जाइए blended learning. Blended. Next इसका आज इसके बड़े चर्चे हैं. Blended learning. What is blended learning? In which we teach both ways. Offline, online. New education policy says that 40%, at least 40% should be online learning. 60% should be offline learning. So content is decided that way. So evolution of digital learning platforms has huge impact on education institutions and has eventually put the traditional method in the back, and now we go for blended learning. Okay. Now I stop here. Thank you very much. Now you ask questions from me. Thank you, madam. Thank you very much, sir, for this extensive and in-depth lecture. So now I have one question from a participant, though the name is not displayed here. And the participant has asked a question. It is observed that the dropouts of students at the primary school level is high. In which way OER can curb this? For primary level? Yes, sir. I You repeat know, Haji, please. The question is, what is the use of OER for primary students? ये question आपका है ना? It is observed that the dropouts of students at primary school level is high. Primary school level पे इतना high क्यों है और OER कैसे इसको कर्व कर सकता है? उसका क्या रूल है? जहाँ पर enrollment forced होगा forced, जबरदस्ती कहोगे आप पढ़ने आ जाते, वहाँ दिक्कत आएगी. अब धीरे-धीरे जैसे आपने कहा, हम लोग कहते हैं भाई बच्चे नहीं आते तो उनको फ्री बुक्स दे दो, इनको मिड डे मील दे दो. उसका वो तो लालच हुआ, रिश्वत हुई. जब तक सीखने की इंटरनल शौक नहीं होगा, मैं तो एडल्ट एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, हमें भी बड़ी दिक्कत होती थी किस तरह जनरल को हम चाहे पढ़ाने के लिए. जब तक हमारे टीचिंग मेथड लर्नर फ्रेंडली नहीं होंगे, जब तक बच्चे को ये नहीं लगेगा पढ़ने का मुझे क्या फायदा है. ठीक है ना? इससे अच्छा कि वो अपना साइकिल पंचर लगा लेगा तो 100 रुपये कमा लेगा, कपड़े प्रेस कर लेगा, ये कर लेगा. तो जब तक बच्चे को ये नहीं लगेगा इस पढ़ने के सीखने से मुझे आर्थिक लाभ होगा या पोजीशन बदलेगी, तो ड्रॉप आउट तो रहेगा. स्लोली कम हुआ है, लेकिन लर्निंग जो आउटकम्स है वो कम होते जा रहे हैं.
क्योंकि हम जबरदस्ती बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, बिना एग्जाम के प्रमोट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए ड्रॉप आउट हो नहीं रहा। और Very पूछिए। true, sir. Very true, sir. एक और क्वेश्चन है सर, what would be the role of the open universities in the context of the new education policy 2020? Okay. New education, हाँ जी। हाँ, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने वो साफ डिफाइन किया है कि ओपन लर्निंग इज द बेटर वे, पॉपुलर वे ऑफ लर्निंग। जो है ट्रेडिशनल है, ठीक है, उनमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वो चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी जब हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, तो ओपन यूनिवर्सिटी का रोल पड़ता जा रहा है। ओपन लर्निंग का फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है कि आपको कंटेंट, चाहे ई कंटेंट हो चाहे प्रिंट कंटेंट हो, घर बैठे मिल जाता है। दूसरा, आपका एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल मैंने दिया, वॉक इन एडमिशन, ये ओपन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। सारे साल एग्जाम चलते रहते हैं, सॉरी एडमिशन चलते रहते हैं। जब आपको मानो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तो मैं एडमिशन जुड़ा हुआ हूँ, सारे साल एडमिशन चलते हैं, ठीक है। जब कहते हैं वॉक इन एडमिशन, ये डेट आप एक्सटेंड भी कर देते हैं। जब मैंने 1994 में इग्नू में काम शुरू किया था, उस समय एनुअल सिस्टम था एडमिशन का, एग्जाम तो था सेमेस्टर। अर्थात अगर आप एडमिशन जुलाई अगस्त सितंबर में लेते हैं, आपका सेशन शुरू होगा जनवरी के अंदर। इसका मतलब क्या था कि बच्चे के 6 महीने बर्बाद गए। बाद में क्या किया कि नहीं, हम इसको साल में 2 बार एडमिशन करेंगे, जनवरी एडमिशन एंड जुलाई एडमिशन। It means that you get admission into semester. Open university will play a definite positive role in NEP, because if you want to increase enrollment at high level, you cannot depend on formal university. Though private universities have come a long way. Your Shobit University, Kerala University, doing a very good job. But there you have to attend regular. Though you have correspondence course also, you have distance education also, but open universities, they provide you a better platform. Openness, they have got certain limitations. Limitations are, as I told you, they are quasi-formal. ठीक है ना? इसमें यह आराम होता है कि जो आपने एग्जाम दे लिया वो आपका, अब आप कह रहे हैं एबीसी, एनईपी में एबीसी भी है, बीएल एंड एबीसी। इट मींस दैट योर एकेडमिक बैंक क्रेडिट, कि जो आपने पास कर लिया अब अकाउंट में जुड़ गया। यू गॉट द पॉइंट? जो पेपर आपने क्लियर कर लिया, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, अगर आप फेल हो गए आप पूरा रिपीट करेंगे, अब ऐसा नहीं है। तो ये फायदा है ओपन यूनिवर्सिटीज का। ये फायदा है, जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको 36 क्रेडिट 1 साल में पूरे करने हैं और 96 क्रेडिट 3 साल में पूरे करने हैं। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का ये है। तो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरी सिस्टम इनटू क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मैडम। Sir, actually, there's a time limit. That's why I cannot ask some more questions. But still, you know, open education system has its benefits, advantages. But every thing has its, you know, demerits also. And there are many more disadvantages. You know, bina guru gyan kahan se aaye? You know, because there's no substitute for a teacher. If there's no doubt clearing session. So there are many more things. You know, nowadays education means only getting degree. So if you get only a degree, or if you just pass your examination on the basis of data collection, you know, in your mind, you just store facts in your mind. So this is not adequate.
इसलिए हाँ मैडम जी, वो तो सारे ओपन धीरे धीरे एजुकेशन देखो मानते हैं का मतलब ही खत्म होता जा रहा है। हाँ जी, मानते नहीं उसको एजुकेशन, ये अरे वहां पे क्या है, नहीं नहीं तुम्हें किसी काबिल नहीं। आई एग्री विद यू, जी जी जी, सम इंस्टीट्यूशन डू नॉट गिव वेटेज टू ओपन यूनिवर्सिटी। वे ओपन से क्या, नहीं नहीं हमारे डिग्री को मानते नहीं, क्योंकि वो बट मकसद क्या स्टिल है। हम, हाँ हाँ बोलिए। जी जी सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, दैट्स ऑल। सर एक्चुअली ये सुनने में आता है कि बच्चों ने पास तो कर लिया बट स्टिल दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। ये तो मकसद एजुकेशन हमारी है मतलब ही। वी आर सोशल, man is a social animal, but education makes us human being, a good human being, a good worthy citizen of any nation. तो कहीं ना कहीं देखिए एजुकेशन में बिहेवियर जब स्किल्स तक बहुत सारी चीजें हैं, देखिए एंड हम लोग आप लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ जी, जब तो हम ये पुराने सब टाइप चीजें के लोग हैं, इनकलकेट होनी चाहिए जी। जब तक बार बार कोई चीज बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं की जाएगी, क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा, तब तक तो आप सर एग्जाम देके डिग्री ले लीजिए। अब आप जानते हैं डिग्री के और तरीके भी हैं, ठीक है ना। तो जब तक डिग्री में दौड़ते रहेंगे ना तब तक होने वाला नहीं। ये ओपन यूनिवर्सिटी का महत्व कम है एज कंपेयर टू रेगुलर डिग्री, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से प्राप्त। अब आप तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में अब जानते हैं कौन सी डिग्री कहाँ से कैसे मिल जाती है, हर जगह भाई। चलिए, और This is human psychology, another part है. But now it's time to show my gratitude. First of all, I thank Almighty God who has given us everything, you know. And secondly, I thank you very much, sir. You have given your precious time to us, and you have, you know, in this enlightened session, you have thrown light on many aspects of open learning education. And next, I would like to show my gratitude towards higher authority of my Shobit family. They have provided us such a congenial atmosphere. yes, I am thankful to Shobha University also that they gave me this opportunity. Okay, thank you very much, and it's a good time for me. Thank you, madam. Thank you. Participants, our purpose is Okay. to conclude the session, and thank you very much, sir. Thank you. Okay. Thank you very much, madam. A Thank very you. brief prayer. Sarve bhavantu sukhini, sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu ma pashyantu bhagavir. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Shobit.